system must have. The other layer of the story is also the political tokenism of food certification. Halal is indeed a Sharia concept, applicable only to the Muslims. There cannot be a generalization of this concept for the majority of the Indians who may have different food preferences and beliefs. If at all, there needs to be some kind of certification. It needs to be done by authorized agencies or bodies. Can religious bodies really be trusted with running a parallel network that affects businesses and communities? The domination of any particular community or one particular community over certification can also lead to unfair trade practices and some kind of monopoly. And why doesn't this so-called halal certification process offend the constitutional value of secularism, which forms the basic structure of Indian Constitution? Our focus on brass tacks tonight. भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम करने का मौका मिल गया है हलाल प्रोडक्ट पे। अब उसको इससे मतलब नहीं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वो खराब होगी। ये योगी सरकार का काम है, कैसे बंटवारा हो, कैसे आपस में लोगों के मतभेद हो, इनका काम है। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोई चेष्टा करे। Well, what exactly this entire halal certification row really about? Let's tell you about the so-called certification and what does it entail. The government does not mandate any kind of halal certification. If you go to the FSSAI website, the Food Standard Authority of India, there is no mandate of any kind of halal certification so-called that you need to get. Government does not provide a unifying regulatory law. This is a huge gap as far as the government and authorities are concerned. The halal certification, which is being provided by many private companies and also certain Muslim organizations like Jamiyat-e-Ulema Hind, which engage in the practice of certification. Private bodies mark food for products as permissible. This is largely a Muslim concept of whether something is acceptable, permissible. Halal means permissible or something that you can consume as a practicing Muslim. Halal India and Jamiyat Halal Trust among the certifying bodies, one of the biggest trust organizations and private bodies that indulge into this job. The Yogi government has imposed a ban. And what are the reasons that the government is citing for this particular ban to come into place? Number one, fake halal certificates have been issued by multiple trusts. The fact that you give this kind of power to private bodies without any kind of checks and balances only opens up the Pandora's box or an avenue for blatant misuse. There's also forgery rackets leading to undue financial gains, which are segregated only for certain organizations and individuals. And not everybody has access to it because there are a lot of Hindus, Christians, Sikhs, other communities which might be in the business and might be affected by the so-called certification. These fake certificates violate public trust in the halal trade. The question for the government here is also that yes, you have banned this. Are you going to give any kind of mechanism in its place? Social animosity promoted via illegal halal trade. That's one of the arguments that has come in from the BJP and from the government. The sale of non-halal companies is affected by this illegal trade. A lot of food items, say your biscuits, medicines, even your namkeen packets, a lot of edible items which are not really, meat products are labeled as halal. And a lot of these manufacturers can come from different communities, and that is how it affects. Unfair advantage passed on to the anti-social elements, and even if you just bypass the prospect of an anti-social element, this is an unfair trade practice. It's some kind of a privilege which is only accorded to one particular community.
unrestrained propaganda bolstering the halal certification. So the Yogi government has cracked a whip, and how this is going to really play out politically, that's a wait and watch. This has also drawn sharp criticism from the opposition camp. In fact, Kamru Chaudhary has tweeted, and this is part of our Motorola, India's best 5G smartphone brand's tweet of the day. Hello, Moto. Now he has said, and I'm quoting right now, that Hindutva thrives on the anti-Muslim propaganda. Halal food certification, if you read what he's written, halal food certification is a new concept meant for export to Islamic countries. Even beef exported from India has to be halal certified. This is something that the government has also clarified and said that, look, as far as export products are concerned, this is not something which is going to affect the exports of the country. And foolishness of the Yogi government to appease Hindus will result in financial loss for India. Now, should financial loss dictate what a government does? Or should we have the right principles of the Indian Constitution, law of the land, guiding us as to what should be the norm when it comes to any kind of certification? Let's get to our big debate. Is the halal controversy or this halal ban legally tenable? The fact that the government has gone ahead, taken this action, is also going to be challenged in a court of law. Hello, Moto. All right, let me cut across to our guests who are joining us on the broadcast. We have Mr. Shalabh Tripathi, who is the spokesperson and MLA of the BJP. We also have Mr. Pradeep Kumar Bisht, who is the spokesperson of the Samajwadi Party. Mr. Danish Qureshi, who is the leader of the AIMIM, is also joining us on the broadcast. Mr. Deshratan Nigam, who is a lawyer and political analyst with us on the show. Good evening to all of you. Namaskar. Thank you so much for joining us on Brass Tacks tonight. Shalabh ji, सबसे पहले आपके पास आऊंगी. I'd like you to open the show for us. The criticism is that this is a project of Hindutva. There are no real concerns that the government is taking care of. और कहीं ना कहीं एक साजिश और प्रोपेगेंडा के तहत योगी सरकार ने इस पूरे निर्णय को लिया है. इसके बहुत खराब परिणाम होंगे, खासकर ट्रेड और जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं उस तरह से. देखिए, बहुत स्पष्ट है कि ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलता है. जी, ये देश एक लोकतांत्रिक देश है, एक सेकुलर स्टेट है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है. और इस देश में अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि कोई शरीयत कानून लागू हो जाए, या आप इस देश को इराक बनाना चाहते हैं, सीरिया बनाना चाहते हैं, तो इस बात की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है. आपको ये पता है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो फूड प्रोडक्ट को लेकर, तमाम सारे जो और प्रोडक्ट्स होते हैं पहनने वाले, यूज करने वाले, उनको लेकर भारत सरकार में कानूनन कुछ संस्थाएं हैं जो ये तय करती है कि कौन सी चीज क्वालिटी की है, कौन सी चीज क्वालिटी की नहीं है. आपने अभी FSSAI का जिक्र किया, तो वो बताती है कि भाई क्वालिटी की चीज है, आपको खाना है, और जिसको नहीं क्वालिटी में होती है उसको मना कर देते हैं कि नहीं, हम आपको सर्टिफाई नहीं करेंगे. उसी प्रकार आपको पता था कौन सा ऑर्गेनिक फूड है और कौन सा ऑर्गेनिक फूड नहीं है. तो क्वालिटी को लेकर बहुत सारी संस्थाएं बनी है. आपको कौन सी चीज कैसे उपयोग करनी है उसको लेकर भारत सरकार की बहुत सारी संस्थाएं बनी है जो कानूनन जो सही है, जो काम करती हैं. लेकिन ये कौन सी संस्थाएं हैं जो रातों रात खड़ी हो गई और ये तय करने लगी कौन सा प्रोडक्ट हलाल है और कौन सा प्रोडक्ट हलाल नहीं है. और बात मीट प्रोडक्ट की नहीं है. मीट प्रोडक्ट तो ठीक है, उनका राइट है, वो उनके धर्म के मुताबिक वो कोई खा सकता है, उनका अपना जो उनका धर्म कह सकता है. लेकिन आप कल को ये तय करने कि लिपस्टिक हलाल है कि नहीं है, फर्नीचर हलाल है कि नहीं. मैं इसी डिबेट में पिछले 2-3 दिन से डिबेट हो रही है, मैं सुन के दंग हूं कि आप क्या क्या सीरिया बनाना चाहते हैं इस देश को, या आप इस देश को क्या बनाना चाहते हैं. आप कहते हैं कि आप जो फर्नीचर यूज कर रहे हैं उसको भी हम चेक करेंगे हलाल है कि नहीं है, नमकीन हलाल है कि नहीं हलाल है. आज एक सज्जन मुझे बता रहे थे कि वो सब्जियों का बिजनेस करते हैं, उनसे कुछ लोगों ने कहा भाई कि आपकी प्याज को लेकर वो सर्टिफिकेशन चाहिए कि हलाल है कि नहीं है. तो ठीक है, दुनिया के बाकी देशों में क्या होता है हमें उससे मतलब नहीं है कि दुनिया के बाकी देशों में एक्सपोर्ट क्वालिटी में क्या हो रहा है, वो दुनिया के मुल्क की क्या कानून है. पर यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो कानून है वो किसी इस प्रकार के इस्लामिक, गैर इस्लामिक, हिंदू प्रोडक्ट, मुस्लिम के तौर पे हमें नहीं बांटता. न हिंदू प्रोडक्ट, न मुस्लिम प्रोडक्ट, न सिख प्रोडक्ट, न ईसाई प्रोडक्ट. हम 140 करोड़ देश की भावनाओं को लेकर चलने वाले लोग हैं, और किसी की भावना अगर इससे आहत होती है और कोई कानून अगर टूटता है तो निश्चित तौर पे इस पे जांच होगी और जो कार्रवाई आगे बनती है वो कार्रवाई होगी. दानिश जी, यू हर्ड मिस्टर शलभ त्रिपाठी, और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं देश में जो है वो संविधान का राज है, एंड इट इज ट्रू दैट द मुस्लिम कम्युनिटी हैज द राइट टू कंज्यूम व्हाट देयर रिलीजन अलाउज देम टू, व्हाट देयर रिलीजन मैंडेट्स देम टू. नोबडी can stop them from doing that, but that's not the issue here. A lot of products like your makeup products, your
quote-unquote vegetarian products like your biscuits and your namkeens, a lot of edible items which may have got nothing to do directly with halal or any kind of certification are being certified by these bodies, and this is an unfair trade practice which also has a political quotient to it, which is developing in some form of extremism. That's what is being hinted at. Danish ji, your comments. अनुषा जी, आई वांट टू रिप्लाई टू शलोभ मणि त्रिपाठी जी, और मैं उनको उन्हीं की भाषा में जरा जवाब दे दूं। सबसे पहले तो मुझे इस बात का जवाब दे दें कि अगर योगी जी ने जो कही सही किया है, और अगर योगी जी के मुताबिक देश को ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, पता नहीं क्या क्या मुल्क के नाम दिए, तो शलोभ जी मुझे ये बता दीजिए कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या मोदी जी ने स्पेशल शरीयतन इजाजत दे रखी है जो अंतरराष्ट्रीय फलक पे उसकी परमिशन ग्रांट करता है? अगर नहीं करते तो सबसे पहले तो वो हटा दीजिए, या तो फिर आप मोदी जी से कहिए कि भाई इसको बंद कर दे। नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं ना, देखिए सबसे पहली बात कि आप यहाँ क्या बनाना चाहते हैं, क्या बनाना नहीं चाहते, देश में क्या बनाना है, ये देश के जो भी जिम्मेदार थे, वो मुझे लगता है कि आज के जो वर्तमान के नेता हैं अपने आप को जो बने बैठे हैं, उनसे कहीं ज्यादा समझदारी के साथ में रह रहे थे। फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, 1 मिनट के लिए अगर आप ये सोच लीजिए कि जब देश में संविधान लागू किया जा रहा था, शलभ मणि जी आप खास सुन लीजिएगा, मोदी योगी जी तक मेरी बात भी पहुंचा दीजिएगा, जब देश में संविधान लागू किया जा रहा था तब तमाम लोगों का इंक्लूसिवनेस का जो सेंस था वो लिया जा रहा था। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि अगर योगी जी उस संविधान सभा में होते तो क्या होता? दानिश जी, देखिए आपको अपने तर्क रखने का पूरा समय दिया गया और एक डेमोक्रेटिक तरीके से हम डिबेट कर रहे हैं, लेकिन संविधान, इंक्लूसिवनेस बहुत अच्छे विषय हैं, इन पर हम कभी और चर्चा कर सकते हैं। इस समय एक मुद्दे पर बात हो रही है, अगर आपके तर्क में, आपकी समझ में यूपी सरकार का जो ये निर्णय है ये गलत है, तो आपको मुझे उसका तर्क देना पड़ेगा कि क्यों गलत है, तो मैं उस तर्क की प्रतीक्षा कर रही हूँ। जी बोलिए। मैम देखिए, सुनिए, मैं आपको बताऊं, दिक्कत ये है कि देश में जो हम संवैधानिक जो हमें हुकूक मिले हैं, ये हमारे पर्सनल हुकूक हैं। मैं आपको बताऊं कि ज़िबा करने की बात की जाए तो शलभ जी से पूछिए, ज़िबा करने के सबके अलग अलग तरीके हैं। अगर सिख कम्युनिटी की बात की जाए तो उनका ज़िबा करने का तरीका अलग है, मुसलमानों की बात की जाए तो उनका ज़िबा करने का तरीका अलग है। तो क्या आप मुझे ये बताइए, अगर सिख कम्युनिटी के लोग अगर यूपी में बसे हैं तो क्या योगी जी उस पर भी पाबंदी लगा देंगे? तो ऐसा नहीं होगा। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब हम बात करते हैं हलाल के डेफिनेशन को, सबसे पहले तो एक बात समझ लिए, हलाल का सीधा बेसिक अगर डिस्कशन कहीं निकल के आता है तो वो इस बात से कि इंसानियत के जो हुकूक हैं, जो पैरामीटर्स में इस्लाम जिसकी इजाजत देता है और इस्लाम कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत हमारे पास इसके हक हैं, ये पाबंदी योगी जी नहीं लगा सकते। और सुनिए, योगी जी तो ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, लेकिन मैं आपसे कानून की बात पे आ रही हूँ। शलभ जी आपके पास भी वापस आ रही हूँ, कमिंग बैक टू यू, बट वन क्वेश्चन फ्रॉम दानिश जी बिफोर आई ब्रिंग इन प्रदीप कुमार जी एंड मिस्टर देशरत्न निगम इनटू द डिस्कशन। बट दानिश जी, संविधान में या किसी भी स्टैट्यूट में कहाँ डिफाइंड है कि हलाल क्या होता है? दूसरी चीज आपने इंक्लूसिवनेस की बात की, बहुत अच्छी बात है, बट इट्स अ 2-way स्ट्रीट। इंक्लूसिवनेस का मतलब सिर्फ एक कम्युनिटी, सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। और हलाल का ये कॉन्सेप्ट नमकीन, बिस्किट, मेडिसिन और लिपस्टिक पर कैसे अप्लाई होता है? आई अंडरस्टैंड इट फॉर मीट प्रोडक्ट्स बिकॉज वो आपका धर्म है, वो आपको मैंडेट करता है, बट देयर आर अदर अलाइड प्रोडक्ट्स जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो सारे बाय प्रोडक्ट्स जो हैं, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो अगर हम इसमें इसकी बात करें, मेट्रो टैलो की अगर बात की जाए तो इसमें बहुत सारी चीजों के अंदर में उसका इस्तेमाल होता है। और मैं तो सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उन सारी चीजों का अगर वेजिटेबल की भी बात की जाए, हलाल के मसले में अगर कोई स्कॉलर से पूछेंगे तो आप ज्यादा बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं बेसिक आपको बताता हूँ कि अगर किसी गलत तरीके से किसी सब्जी को भी पैदावार किया जा रहा है और वो भी अगर नुकसानदेह है तो वो भी हलाल के और हराम के दायरे में आ जाती है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस तर्क से देश चल सकता है। खैर, मैं तो ये मानती हूँ कि सब्जी वैसे ही खानी चाहिए जिसे आपको खाकर और मुझे खाकर न्यूट्रिशन मिल जाए। शलभ जी, आपको 30 सेकंड्स दूंगी, फिर उसके बाद प्रदीप जी के पास जाऊंगी। शलभ मणि त्रिपाठी। देखिए, मैं तो हैरान हूँ, दानिश भाई बहुत समझदार व्यक्ति हैं। मैंने कहा ना कि हाँ, खाने पीने का अधिकार है, आप किस प्रकार से हलाल करके खाते हैं, ये आपका अपना अधिकार, उस पर कोई कुछ कहने भी नहीं जा रहा। लेकिन अब दानिश भाई जैसा व्यक्ति बता रहा है कि सब्जी उग रही है, वो किस प्रकार से उग रही है, हलाल है कि नहीं हलाल है, मुझे बड़ी हैरानी होती है। अरे कोई चीज अगर खराब हो रही है तो आपके पास खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आपके पास 20 सेकंड देखो इसमें खराब क्वालिटी की है। आप जैसे बताएंगे कि सब्जी खराब ढंग से उगाई जा रही है
हमारे पास प्रामाणिक संस्थाएं हैं, मार्केटिंग इंस्पेक्टर होता है, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, वो कार्रवाई करती हैं। लेकिन आप इस्लामिक तरीके से कैसे तय कर सकते हैं? कल को इस प्रकार अगर हिंदुओं ने तय कर दिया कि हम तय करेंगे कि कौन सी चीज हमारी मुनासिब है, कौन सी शुद्ध है, अशुद्ध है, आपको कैसा लगेगा? तो इस देश को बांटिए मत। हालांकि आपकी पार्टी का नाम ही ऑल इंडिया मुसलमान है, आप केवल एक धर्म की बात करते हैं, आप सभी की बात नहीं करते, तो आपसे हम बहुत अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन किसी धर्म के विधान से तो ये देश नहीं चल सकता। सर, I'll come back to you, but there are other gentlemen also with us on the broadcast. Sir, I'll come back to you. Allow others also to make the comment. I'll come back to you, sir. I'll give you the opportunity. Mr. Pradeep Kumar Bhatti, I'll come to you. The Samajwadi Party has also taken a position and a stand on this entire matter. But I believe एक सबसे बड़ी समस्या इसमें ये है, the biggest problem is that right now we don't have a set of laws or rules at the national level or at the state level. If at all there is this kind of certification which is required at all. There is a lacuna in law that exists and that is being exploited by a lot of private players in this entire matter. The fact that law of the land does not allow this kind of certification, would you still back the position that has been taken by AIMIM or various other people? Pradeep ji. Thank you, Anisha, and good evening to all. First thing, I want to say that I have the order of UP government, which states that the production and the storage of halal certified products is legal in India. You can export it, you can use it for export, but internally consumption is prohibited. That's what I have understood from this order. Okay. The second and most important thing is that we should not get diverted from the issue. The issue is that who has stopped the UP government from last for 6 and 7 years to make a law or a regulation to it, and who has stopped Modi government from last 9 years to have this order, where there is a lot of exports happening around the world. You have an organization which gives certification. You say it is illegal in India, and when they export the same certificate that is legal in India, I do not understand the same organization. How come that same organization becomes legal, and the same organization when certified for export is it's legal, and for India it's illegal. That's very strange. Okay. Secondly, it's not new in the UP BJP or BJP government. Such a lack of insight and unthoughtful approach is very common in Uttar Pradesh. So many big organizations across the India and MNCs, international MNCs, are also having these certification, including the largest milk producer of India. So these all organizations have taken that certification. Why the BJP government was sleeping if there was some issues related to the certification, registration, or rules and regulations? Who has stopped them from making they talk about, they do all this tall talks about the policy framework and ease of doing business. No, where that ease of doing business when we are exporting it to the entire world with the same certification? Sir, I think two thirdly, points. The most important, Anusha, just 30 seconds. Sure. And most important point is BJP wants to, BJP want to blow out this issue, and the reason of blowing this issue is that they want to run away from the core issues that is affecting the common people. That is the price rise, the very high inflation, very high unemployment, which is 25% in the rural area in Uttar Pradesh. What about the corruption that is happening? See, in Uttar Pradesh, I'll take all these 3 points. Sachivalaya Bharti Ghotala. What a strange Ghotala we have heard. You haven't heard in the entire country. I think one of the most important points. I'll take all these 3 points to the BJP, and Shalabani ji unka jawab bhi zarur denge, I'm sure. But I think is puri debate mein, in this entire debate, one of the biggest things that has emerged is, and which I believe should be talked about, is that if we disagree with this kind of private/religious bodies giving these kind of certifications, we need to have rules in place coming in from the elected governments, secular governments of the country, defining what should be the course ahead. Mr. Deshratan Nigam, is there a lacuna in law? Well, Anusha, let me tell you, if this is not stopped, tomorrow I am sure there will be a Sanatan certificate for all the products, and that day will not be far, because this certification is unconstitutional. Constitution does not mandate it.
first. Even under the minority rights, it is not there because we do not follow Sharia law. We follow our own constitution. And halal is under the Sharia law. Let us be very clear. Absolutely. Now, and secondly, there is no in the law because we have certain certification based on products. Now about the food, it is FSSAI Act. Yes. Under the agricultural product, it is the egg mark. And non-agricultural, non-food products, we have ISI mark by the BIS. So for specialized products, we have centralized authorities to give certification. And to give such kind of a private certification is discriminatory. It removes non-Muslim companies from producing products which are consumable by Muslims, one. Secondly, halal process can only be done by Muslims. Therefore, non-Muslims will be removed from the employment chain, which is very discriminatory. I think let me, sir, this is an important point you have made. Danishri, before I go back to Mr. Shalabh Tripathi, a very quick answer from you. Can a person from any other community, barring a Muslim, produce or generate or manufacture a product which is halal to the community, or the requirement or the requirement is that the person has to be a Muslim? No, we are having Alana, Al Kabir. These are the biggest industries holder. Those who are not Muslim and supplying the meat in the international market. We can get you can get from Mr. Shalabh Tripathi ji. But the problem is that they want to create a rakas in the name of halal. Okay, that's an assertion you're making. That's an assertion you're making. Mr. Shalabh Tripathi, sir, Shalabh ji, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि ठीक है, सरकार ने एक फैसला लिया कि इस तरह की प्राइवेट बॉडीज इस तरह का क्रेडिटेशन नहीं कर सकती, और अगर भारत के संविधान, भारत के कानून को देखा जाए तो कानून में तो इसका कहीं भी विवरण नहीं है, कहीं भी उल्लेख नहीं है, तो इसका कोई स्टैट्यूटरी या लीगल बेसिस नहीं है. लेकिन अगर ये ट्रेड को इफेक्ट करता है, अगर मार्केट में इसकी डिमांड है, तो क्या पहले राज्य सरकार को इसके नियम बनाने चाहिए थे? और दानिश जी तो कह रहे हैं कि जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं वो नॉन मुस्लिम्स भी बना सकते हैं, तो फिर ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कैसे हो गया? नहीं, मुझे एक बात बताइए अनुषा, की कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जो फैक्ट्री ये तय करती होगी कि कौन सा प्रोडक्ट हलाल है, कौन सा प्रोडक्ट हलाल नहीं है? उनको जानने, उनके नियम कानून के तरीके कौन से होंगे? जो ये कहते हैं कि हमारे अपने पैमाने, उसको क्या कोई नॉन मुस्लिम उसको देख भी सकता है? उसको क्या पता कि शरिया क्या है? उसको क्या पता कि इनके इस्लामिक कानून क्या है? उसको क्या पता कि किसी चीज को हलाल बताना या गैर हलाल बताना वो कोई नॉन मुस्लिम इसको कैसे कर सकता है? तो ये तो सीधे तौर पे इसके पीछे क्या खेल है, इसको समझने का प्रयास है. ये एक तरह के बिल्कुल कारोबारियों को पीछे धकेलने का प्रयास है. अब आप देखिए, मटन के कारोबार में हमारे हिंदू समाज का भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मटन के कारोबार से जुड़ा हुआ है. वो कई समाज के लोग उनको डिस्करेज करने के लिए, नहीं, उनको डिस्करेज कर दो, हमारे लोग हो जाए. उसी प्रकार आप देखिए, फर्नीचर से भी हिंदू समाज के एक बहुत बड़ा तबका है जो फर्नीचर के कारोबार में वो जुड़ा होता है. वो सामाजिक पृष्ठभूमि उनकी ऐसी है, उसको डिस्करेज कर दो कि वो बिल्कुल बाहर हो जाए मार्केट से. लेकिन शलभ जी, आप मुझे ये समझाइए कि वो डिस्करेज कैसे होंगे? मैं आपसे एक बहुत सिंपल सवाल पूछ रही हूँ कि अगर नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स भी हलाल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और किसी बॉडी से सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन सही है, मैं मानती हूँ कि कोई कानूनन एक बॉडी होनी चाहिए, पर उससे एक नॉन मुस्लिम का राइट कैसे इफेक्ट हो रहा है अगर वो ट्रेड और प्रैक्टिस कर सकता है अपना? तो शलभ जी, देखिए, जो संस्था सर्टिफाई कर रही है वो संस्था गैर इस्लामिक तो नहीं है, केवल इस्लामिक है, क्योंकि उनको ही तरीके पता है. मैं अगर आपसे पूछूं अनुषा से कि आप अनुषा मुझे बताइए कि हलाल करने का प्रोसेस क्या है, आप बता पाएंगी? या मैं किसी और से पूछूं, बता, कोई इस्लामिक कानून को मानने वाला व्यक्ति ही बता सकता है. तो जो सर्टिफाई करने वाली संस्था है जो कि पूरी तौर पे गैर कानूनी है, वो 2-2 लाख से लेके 5-5 लाख रुपए तक ले रही है. वहां पर जो मोनोपोली है किस प्रकार की है कि हमें कौन से प्रोडक्ट को अपने लोगों के बीच में पहुंचाना है, अपनी कम्युनिटी के बीच में पहुंचाना है. और इस प्रकार से अगर आप धर्म के आधार पे किसी भी प्रोडक्ट का बंटवारा करेंगे तो एक तरह से जो हमारे देश की जो अपनी संप्रभुता है, हमारे देश की जो कम्युनल हार्मोनी है, उसको आप डैमेज करते हैं, उसको आप नुकसान करते हैं. क्योंकि इस देश में कभी किसी हिंदू ने ये नहीं कहा कि भैया मुसलमान प्रोडक्ट बना रहे तो हम उसका नहीं यूज करेंगे. आप देखिए, लखनऊ के भीतर टुंडे कबाब है. अनुषा, ऐसा नहीं है. लखनऊ के भीतर टुंडे कबाब है. बहुत सारे हिंदू परिवार के लोग जाते हैं. मतलब कबाब तो 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, अगर आप बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे तो वहां पर बहुत सारे मुस्लिम आर्टिस्ट हैं जो कृष्ण जी के कपड़े
बनाते हैं, कृष्ण जी का मुकुट बनाते हैं। आप बनारस और चंदेरी में चले जाइए, वहां पर जो मंदिर हैं, वहां पर मंदिरों में जो कपड़े चलते हैं वो सारे मुस्लिम आर्टिस्ट हैं जो इस देश में बनाते हैं और बहुत खूबसूरत बनाते हैं, पुश्तों से बनाते आ रहे हैं। यही इस देश की सभ्यता और संस्कृति है। दानिश जी, are you promoting some kind of fundamentalism in this country by taking it beyond a point? एक हद तक मुझे बात समझ में आती है कि जहां आप मीट खा रहे हैं, कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, रिलीजन में एक डायरेक्ट कमांडमेंट है, आपको फॉलो करना है और आपको करना भी चाहिए, संविधान आपको इजाजत देता है। But to take it beyond a certain point is indeed fundamentalism in its own way. ओके, शलभ मणि त्रिपाठी जी, मुझे इस बात का ये जवाब बता दीजिए कि अगर आपके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली के बीच बस्ती में ये कहते हैं कि मुसलमानों का बायकॉट करिए, तो क्या उसके ऊपर कोई एक्शन हुआ? क्या ये सर्टिफिकेशन नहीं हुआ? इस पे कोई जवाब था आपके पास? आज तक उसमें एफआईआर नहीं, इस पे कुछ बोलेंगे आप? उस पे नहीं बोलेंगे। दिक्कत क्या है? आप सिर्फ लिमिटेड बात करेंगे। अभी जब आपने जब मैंने आपको बताया कि भाई गैर मुसलमान भी किस तरीके से हलाल बिजनेस के अंदर में एफिलेटेड है, तब आपको ये बात कबूलनी पड़ी कि कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनियां और हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां इसके अंदर में इन्वॉल्व है। इसलिए हलाल के सर्टिफिकेशन को लेकर आपके दोहरे मापदंड, अगर आप ये कहें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाइए, आप बेचिए, सर्टिफाइड भी करिए, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको वैलिड भी करेंगे, स्टेट में आप बैन करेंगे, तो ये दोहरे मापदंड कैसे हो सकता है? इसलिए भी है, देखिए मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूं, लेकिन अगर बेसिक पॉलिटिकल साइंस की आपको अंडरस्टैंडिंग है तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं हैं, वो मुस्लिम नेशंस हैं जो शरिया कानून से चलते हैं। और अगर हमें अपने बिजनेस इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं तो हमें कहीं ना कहीं राइडर और वेवर देना पड़ेगा, क्योंकि उन कंट्रीज में उस तरह के नॉर्म्स हैं। हिंदुस्तान एक सेक्युलर कंट्री है। प्रदीप जी को भी मैं डिस्कशन में लाना चाहूंगी, आपके पास वापस आऊंगी शलभ जी। Pradeep ji, isn't it taking the religious ideas and whatever beliefs you may have as an individual, as a community, beyond a certain point, and too much of anything becomes fundamentalism? While we, very beautifully talk about secularism in this country and the Ganga Jamuni Tehzeeb, but that being said, it is a two-way street. That kind of flexibility, that kind of acceptance needs to come from both the sides. Pradeep ji. Yeah, I think you are right, but Mr. Tripathi has to understand that this particular country has all religion, and every belief has to be respected, which they don't believe into. This is a simple law and order issue. If some organizations are giving this certification, if they are doing something wrong in that is the responsibility of the BJP government. Why they are hiding and running away from that responsibility and trying to make this issue such a big issue? They are just wish to make this mountain out of this molehill. So, Pradeep Kumar ji, if tomorrow all the Hindu mutts unite, Pradeep ji, one question. If tomorrow all the Hindu mutts unite and say that whatever is offered in temples of this country needs to be Sanatan certified, and it needs to be done in a certain way by particular set of individuals with particular practices, you have to follow a certain set of rules, and only then these items could be used in the religious practices. Forget your everyday life. Wouldn't that affect millions of lives, millions of jobs from the minority community? And would that be tenable then, sir? See, whatever is there as per the law, whatever is possible as per the law, and whosoever is breaking that law, we have to take that action, whether it's a Hindu community or that Muslim community. So that we have to understand, this is not an issue about which BJP is trying to make it. This issue is why BJP, that what I was trying to say, why BJP wants to make this a big issue is that they do not want to talk about the corruptions that is happening in Uttar Pradesh. चलिए, ये सवाल शलभ जी से पूछ लेते हैं. ये सवाल शलभ जी से पूछ लेते हैं. They do not want to talk about. Shalav ji, is that your distraction technique? Let's talk about the important issues. Is the government? Halal issue is not that big issue. सर, मैं पूछ रही हूँ उनसे. मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ. आपने पहले भी बोला था. Issue which has to be taken care by the law. So why we are making it such a big issue? Sir, it is becoming a big issue because of the reactions which are
because it has reached the court, because there are various top Muslim organizations which have taken objection to the decision of the government. That is why it has become so important. But I'll ask that question, Sharad ji, क्या सरकार अहम मुद्दों से भाग रही है और इसी वजह से ये हलाल जैसे मुद्दे? Yes, no, one second. Let Mr. Shalabh Tripathi come into the discussion. Then I'll come back to you, Pradeep ji. Yes. देखिए मुद्दे क्या हैं, अहम मुद्दे क्या हैं, इनको हम तय करेंगे क्या या प्रदीप जी तय करेंगे? ये मुद्दे क्या है, जनता तय करती है। और मैं तो कह रहा हूँ ना कि अभी मुश्किल से 1.5 साल पहले ये समाजवादी पार्टी के लोग गए थे, कांग्रेस के लोग भी गए थे, AMI के लोग भी गए थे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करके हम भी अपने मुद्दे रख कर आए और जनता ने मुद्दों को पहचाना। कौन से मुद्दे हैं? क्या उत्तर प्रदेश के दंगे मुद्दे नहीं थे क्या? मुजफ्फरनगर के दंगे किसकी सरकार में हुए? आतंकवादियों की रिहाई क्या मुद्दा नहीं थी क्या? और आप कहते हैं ये मुद्दे नहीं, क्यों मुद्दे नहीं है भैया? आज हलाल का सर्टिफिकेट बट रहा है और प्रदीप जी अपने घर पे जाके पूछिएगा अपने परिवार के लोगों से कि क्या हलाल, आप तो यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप तो बोलेंगे, लेकिन प्रदीप जी के परिवार के लोग क्या इस बात से सहमत हैं कि किसी प्रोडक्ट पे हलाल का सर्टिफिकेशन होना चाहिए? क्या इस देश में इस प्रकार की प्रवृत्ति चलनी चाहिए? तो मुद्दे आप नहीं तय करेंगे, मुद्दे हम भी नहीं तय करेंगे, मुद्दे इस देश की जनता तय करती है, उसको तय करने दीजिए। और आज देश की जनता जिन मुद्दों से जुड़ी हुई है उसी का परिणाम है कि 2014 से आप लोग बार एक ही रट लगाते हैं। 10 साल होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश में 7 साल होने जा रहे हैं योगी जी को। मुद्दे क्या है उनको आप पहचान नहीं पाते, आप इसीलिए तुष्टीकरण करते हैं और आज खुल के हलाल के सर्टिफिकेट के साथ खड़े हैं और जनता इस पर भी जवाब देगी। Pradeep ji, a quick response from you, then I'll bring in Mr. Desh Ratan Nigam and Danish ji into the discussion. मैं शलभ त्रिपाठी जी को ये पूछना चाहता हूं कि जो आप ये बता रहे हैं कि मुद्दे कौन डिसाइड करेगा, आपको किसने स्टॉप किया था पिछले 6 साल से और 9 साल से मोदी गवर्नमेंट को किसने स्टॉप किया था ये सर्टिफिकेशन रोकने के लिए? आप पहले उसका आंसर दे दीजिए। और आप अपने इनकम्पिटेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, आप यू आर ट्राइंग टू put that incompetency of the government on the other party. You are in the government from last 9 years in the center and more than 6 years in the Uttar Pradesh. Who has stopped you from doing that? So you are trying to put this particular issue, you want to burn that issue and try to gain some votes from that, which is not going to happen in this time. And everybody, all the people of this country understand that what BJP is trying to do in when the elections are near, they are just trying to do what they are doing best from last so many years. They will not talk about the issues related to the employment of the country. Listen to the other side now. Pradeep ji, you've made your point. Listen to the other side. जनता ने हमें जनादेश दिया है, हम कौन सा काम कब करेंगे? 5 साल के लिए जनादेश दिया, हमारी सरकार को 1.5 साल पूरे हुए, हम कौन सा काम कब करेंगे हमें तय करने दीजिए। आप जब थे तब तो आपने बढ़ावा दिया, आपने आतंकवाद, लॉ एंड ऑर्डर आप बाद में देखिए। एक व्यक्ति एक ही समय पर, मेरा निवेदन है। हमने 370 हटाया, आपने कहा आज क्यों हटाया? आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है, बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, नोट कर लीजिएगा 22 जनवरी की है। 3 तलाक हटाया, बोलते आज क्यों हटाया? अरे हम तो हटा रहे हैं, आप तो बढ़ाते चले गए। आज अगर इसको लेके कार्रवाई हो, लॉ एंड ऑर्डर इट हैज टू बी dealt today, not 6 years, 7 years, but it's not a policy. One at a time, sir. One at a time. Let him finish his argument. One at a time, sir. One at a time. Just Shalabh Tripathi, please. You are saying आज Shalabh Tripathi, right? 6 साल Shalabh Tripathi. नहीं, इरिटेट मत होइए, इससे लगता है कि आप भटक गए हैं इसलिए परेशान होते हैं। हम लोग वर्चुअली जुड़े हैं, दूसरे को साथ नहीं बैठे हैं, तो आप कहते एक तो आपने कुछ किया नहीं, आपने बर्बाद किया, हम ठीक कर रहे हैं, आप पूछते हैं आज क्यों करें? अरे भाई जनता ने 5 साल दिए हमें सेवा करने के लिए, हम 499 दिन भी करेंगे, 99 दिन करेंगे, तो भी आप ये नहीं पूछ सकते। ये बात तो मैं शरद जी मानती हूँ कि ये कोई मूल तर्क नहीं है कि आपने अभी क्यों किया, बट ऑन द क्वेश्चन ऑफ विल द गवर्नमेंट ब्रिंग इन सम लॉज एंड रूल्स, आई विल कम बैक टू यू, उस विषय में भी मैं आपसे बात करूंगी। दानिश कुरैशी जी, वही सवाल मैं आपके साथ दोहराती हूँ, आई विल रीइटरेट द सेम क्वेश्चन टू यू, दैट इन दिस ब्यूटीफुल कंट्री, इन द ब्यूटीफुल सेक्युलर फैब्रिक of this country, there are very talented Muslim artists who work for various kind of trades and practices which are intrinsically linked to the Sanatan Dharma, and that has what been celebrated in this country. If tomorrow there is a Sanatan certified product that starts being issued by certain maths or religious bodies in this country, wouldn't that affect millions of jobs, and wouldn't that really qualify as some kind of religious fundamentalism in this country? तब आप कहेंगे कि देखिए हिंदुत्व कितना बढ़ता जा रहा है इस देश में, लेकिन आज जब हलाल सर्टिफिकेशन है तो वो फंडामेंटलिज्म नहीं है।
आई वांट टू रिप्लाई यू अनुष्का जी। सबसे पहले तो शलभ मणि जी को मैं जवाब दे दूं। उन्होंने पूछा था ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के उसमें नाम में ही मुसलमान है, तो बड़ा फक्र है मुझे मुस्लिमी नाम होने में। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि देश की एक मस्जिद को तोड़ने की राजनीति करने वाली पार्टी वो बात कर रही है AIMIM के स्टैंड पे, इसका अफसोस है। दूसरे नंबर की बात, शलभ जी जो सवाल आया है इसका जवाब मैं आपको दूं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो लोग भी किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, चाहे मुझे लगता है कि वो धार्मिक व्यवसाय हो या और कोई भी व्यवसाय है, जहां जहां जो कुछ भी है अपने अपने स्तर पे वो काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन की अगर बात है तो अगर आप भी हलाल के सर्टिफिकेशन की डिटेल मांगने के लिए किसी भी आलिम उलमा के पास जाएंगे तो वो आपको भी रिप्लाई देंगे कि भाई इस्लाम क्या दर्श देता है इसका। आपको उसको एक्सेप्ट करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। मैं आपको बता दूं, कम से कम हजारों कार्यकर्ता आपके पास भारतीय जनता पार्टी के होंगे, क्या किसी ने आपके मुखालिफ हलाल का सर्टिफिकेट दिया कि भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मस्जिद शहीद की थी, उस पार्टी में मत जाओ? नहीं है। ये तो सवाल ये है कि देश में आजादी है और आपके पास, आप आजाद हैं अपना काम करने के लिए, अपना तर्क, बशर्ते कि किसी और को परेशानी हो रही है। तो अगर किसी को परेशानी हो रही है तो वो जाए, बजाय इसके स्वरूप में। दूसरे नंबर की और आखिरी बात मैं बता दूं शलभ मणि जी के उत्तर प्रदेश का जो लीगल टीम जो है ना, आप याद रखिएगा, ये जाकर इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अगर वो हाई कोर्ट जाएंगे तब भी और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब भी हलाल के मैटर में देख लीजिएगा, हम एक बार फिर कहीं ना कहीं चुनाव में मिलते रहेंगे। इसमें आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया दानिश जी। कल अगर सनातनी सर्टिफिकेट होगा तो वो हिंदुत्व होगा या नहीं होगा? देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर किसी मैं वो है, ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है। कहां है? मैंने तो नहीं देखा। मैं बताऊं आपको। देखिए, आप एक बात मुझे बताइए कि अगर कोई नॉन वेजिटेरियन वो है होटल है कहीं पर, तो वहां कोई आदमी जाएगा तो बट ऑब्वियस है उसको पता चलेगा कि भाई यहाँ ये नॉन वेजिटेरियन जगह है, मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे नहीं काम करना चाहिए। तो ऑलरेडी ये मामले हैं। और सुनिए, ये जो प्रॉब्लम है, नहीं क्यों क्या कर रहे हैं, मतलब आप किसी नॉन वेजिटेरियन अभी तो पूरी डिबेट ही यही हो रही है कि खाने पीने की बात ही नहीं है। आप लिपस्टिक, बिस्किट्स, आप मेडिसिन, आप दूसरे प्रोडक्ट्स पर चले गए, यू हैव एक्सटेंडेड इट बियॉन्ड अ पॉइंट। दैट्स द एंटायर डिबेट। ओके, नाउ कम टू द थिंग। मैं आपको बता दूं, अनुषा जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, CNN के तमाम वो फॉलोअर जो उनको भी बताइएगा, गुजरात के अंदर में अभी नवरात्रि के अंदर में लिटरली ऑर्गेनाइजर जो थे उसके अंदर में उनके रिलीजन के बेस बनाकर उनके जो काम था वो बैन किया गया। आप कहें तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उसकी परमिशन नहीं दी बड़ौदा में अंदर। ये बिल्कुल बड़ौदा में हुआ ही है। पूछिए शलभ मणि जी से। नहीं, मैंने तो आपसे कुछ और सवाल पूछा, आप मुझे एक दूर का एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, लेकिन ये बात तो एक फैक्चुअल प्रूफ है ना कि इस देश में बड़े बड़े मंदिरों में बड़े बड़े चढ़ावे, वस्त्र, आभूषण, ज्वेलरी, क्लोथ्स, व्हाटएवर इज ऑफर्ड इज मेड बाय द मुस्लिम आर्टिस्ट ऑफ दिस कंट्री, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट, and they make it very beautifully for generation. There is no Sanatan certification there. Should we start doing that? Okay, आप अजमेर गई हैं दरगाह पर अनुषा जी? चले जाइएगा आप बाहर। नहीं, कोई नहीं अच्छा नहीं गई तो बाकी के जो लोग भी गए हो उनसे पूछिएगा। अगर आप के बाहर देखेंगी ना, तो जितने भी लोग हैं वहां सेवा देने वाले, वो मैक्सिमम उसमें 80% मुसलमान हैं ही नहीं। पता कर लीजिएगा आप। लेकिन कभी किसी ने, मैं तो 10 बार चादर चढ़ाने गया हूं, मैंने कभी ये नहीं पूछा कि आप क्यों मुसलमान नहीं है इसलिए मैं आपके यहाँ से क्यों खरीदूंगा। वहां से चादर तो हमने भी खरीदी है, टोपी तो हमने भी खरीदी है, हमने भी लिया है। अगर शलभ मणि जी को दिक्कत है तो शलभ मणि को राजनीति करनी है तो करने दीजिए, हमको कोई परेशानी नहीं है। नहीं, सर्टिफिकेशन, हलाल सर्टिफिकेशन की बात हो रही थी और मैंने आपसे पूछा कि क्या सनातनी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। मिस्टर देश रतन निगम, डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट शुड कम विद अ सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड रूल्स? दे हैव टेकन वन स्टेप, they want to justify it legally, but when this goes to the high court, there was an important point that was made by Danish Qureshi, that the court is going to ask them that what is the basis on which you have done this, and will they be able to legally justify this move? Well, Anusha, one thing is very clear. First, let me raise few points. Yeah. None of the non-Muslim companies are producing halal products. Let us make it very clear, but they are compelled to have halal certification. Because they want to have that marketing space more, as they otherwise they would be restricted from selling their products into Muslim community. So therefore this illegal extortion of money which actually goes in defending terrorists, writers, murderers and rapists, that's also a very serious question, first. And secondly, whenever a issue is challenged before a court, then the court looks for
if a certification is given, what is the legal basis or constitutional basis? That does not exist. That does not There exist. is no backing Closing of the comments law. from you, Pradeep ji. Do you think that the UP government, after banning, should come up with a set of rules, and will you be satisfied with it? 30 seconds, sir. Firstly, we have to make a law. What Mr. Deshratan was saying, that we have to understand that there has to be a law before we compare that particular lawfulness or unlawfulness with the lawfulness. There has to be some set of rules and regulations. I want to ask Mr. त्रिपाठी, आपने 2022 में 40 चीजें बताई थी जो आपको पूरी करनी थी किसान की दुगनी इनकम से लेके, आप उससे कब तक भागते रहेंगे और कब तक टोपी घुमाते रहेंगे? मुझे नहीं लगता 30 सेकंड में वो आपको जवाब दे पाएंगे। मगर शलभ जी, मैं हलाल के इशू पे वापस आती हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है, आप इसको कोर्ट में जस्टिफाई कर पाएंगे? और क्या उत्तर प्रदेश सरकार कोई नई नियमावली लेकर आएगी? देखिए, ये सवाल तब भी उठा था जब हमने उत्तर प्रदेश के दंगाइयों से वसूली का अभियान चलाया था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो दंगा करेगा, पुलिस पे पत्थर फेंकेगा, लोगों पे पत्थर फेंकेगा, उससे वसूली करेंगे। ये जो तमाम पैनल में बैठे हुए भाग के गए थे हाई कोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, कुछ नहीं हुआ, जम के वसूली हुई और सारे दंगाई शामिल। जब चौराहों पर दंगाइयों के उपद्रवियों के पोस्टर लगाए थे, तब भी ये रोते हुए चेहरे भागकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे कि साहब दंगाइयों के पोस्टर लगा रहे हैं, डंके की चोट पे पोस्टर लगे रहे। और जब धर्मांतरण कानून, जब लव जिहाद का कानून बनाया था, तब भी ये तमाम चेहरे रोते भागते हुए गए थे सुप्रीम कोर्ट तक कि भाई लव जिहाद का कानून बना रहे हैं, तो बना दिया। लव जिहाद जो करने वाले थे, कार्रवाई हुई, अब लव जिहाद की घटना रुक गई। अभी हमारे साथ बोल रहे थे कि साहब गुजरात में ऐसा कर दिया। अरे तो गुजरात में नाम बदल के गरबा में क्यों जाते हैं भाई? नाम बदल के, धर्म बदल के, फर्जी आई कार्ड लेके गरबा में जाओगे, पकड़ के कार्रवाई। I'm afraid we have completely run out of time. But I'd like to end on a constructive note. Thank you, gentlemen, for joining us on the broadcast. That it's great that the UP government has taken a call and decided to put an end to a system which was completely extra legal. It had no rule or statutory basis to it. But if these certificates are to be issued, if there is a need, law needs to come up to address that gap that already exists right now. Will we have rules at the state level? We're slipping into a very short break. Coming up on the other side, civic apathy claims 2 more lives in Bengaluru, where a mother and a daughter are electrocuted by a live wire. Is civic duty not a priority in the IT capital of the country? Stay tuned. Hello, Moto. बस This water coming from? What is the source of this water? Source must be minor. It is a water coming from local spring. So spring. Must be. No, it is not spring. Surface. Actually, surface water coming from mountain. Surface water.
Hey, Mr. Dick. Mr. Dick. No, he knows me and Flecky Winter. But the staff here is so good. I mean, may I have your... Sir, good morning. Sir, बोलिए सर. गई है सर. ना फर्स्ट बैच का अभी नहीं हुआ ना सर. एक्चुअल में दैट इज द वे जस्ट लाइक इलेक्शन Welcome back. And tragic news is coming in from the IT capital of the country, Bengaluru, where a 22-year-old Soundarya and her 9-month-old baby daughter Leela, they died due to electrocution on Sunday. The two had come into contact with a live wire that had fallen on a footpath. The Bengaluru Electricity Supply Company has suspended 5 of the officials for the negligence and issued show-cause notices to 2 other senior officers. But that's hardly enough. 2 lives have been lost. Karnataka Energy Minister KJ George also took note of the incident and ordered the suspension of the officials. While the state government has announced 5 lakh rupees compensation, BJP has lashed out at the Congress government, calling it irresponsible and corrupt. The question remains, as the urban death traps in Bengaluru continue to claim lives, has the civic apathy trumped the civic duty and the moral responsibility of the government to do their job? Sometimes it's potholes, then it's urban flooding, and now these live wires. We seek the questions and accountability from the elected government of the day here on Brass Tacks tonight. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಕಾಪಾಡು ಕಾಪಾಡು ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡು ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ಲು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗೂ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ರೋಡ್ಗೂ ಬಂದೆ. ಅಂತ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ On the broadcast is Aishwarya Mahadev, the spokesperson of the Congress party, Dr. Narendra Rangappa, the spokesperson of the Karnataka BJP, is joining us on the broadcast. Good evening to both of you. Aishwarya, I'm sure you must have seen that visual that has gone viral on social media. It is something that has been played out on the national television as well, of course, with the disturbing part of that visual being blurred out. But can we really imagine that in the IT capital of the country, there is a live wire, there is a young her baby who lose their lives, and all we have as a response is suspension of 5 officials. I'm sure you wouldn't be happy with that as a responsible citizen. Good evening. I think what has happened is not unfortunate, but absolutely heartbreaking and gut-wrenching. I think nobody, irrespective of dispensation, irrespective of where they are, has or should ever be put through something like that and to lose their lives, and especially young lives that are lost. And I believe that at this point, the strongest condemnation, irrespective of which side of the political spectrum I am from, is something that has to be offered. There are 2 very important questions here, and irrespective of political dispensation over the years, Bangalore city faces 2 big issues, and also in the state. One is of accountability, and second is how do you really solve this issue? On the issue of accountability, let me not make this political. I will tell you that there has been a prompt response. Yes, compensation will never make do for the life that is lost. Yes, suspension may not. But the minister has openly gone on to say that the accountability squarely lies with the electricity supply company and larger with the ministry, and will look to address this, has not abdicated any responsibility whatsoever. There is an inquiry. Mr. Bilgi himself, the MD of BESCOM, also has been put in the spotlight to have the investigation in order to apportion blame. I believe the only way to tackle this is to have strong enough and strict enough action, and it cannot just Aishwarya, be a... I shudder when I think
that is there a live wire in any other part of the city which is just lying in this manner, which can claim any other life? Is there an audit that this company is doing? The questions are far more serious than suspension and the head of the company taking some kind of accountability. We need an audit. We need action on criminal negligence. And this is much more than suspensions and few statements from the ministers. Yes, please. Can I just answer? Yes. So with the media especially, you're absolutely right. I believe that even that there has to be far more cooperation and far more collaboration between citizenry and machinery to ensure and look at danger zones so that the government can fix it. I believe that there are civic action groups that are also in conversation, and understood the suspension is not enough, but I believe culpability is far more important. And I think that the fact we're signaling in the right direction with 2 high officers also being given notice on this. And lastly, let me just add, Bangalore, especially with its variety or myriad of agencies, creates a large confusion as to who's accountable where. And this is an appropriate time for us to fix and right a lot of wrongs. And I believe Mr. KJ George, Mr. DK Shivkumar and the Congress government will ensure that this happens. And this is not political. You know, wherever there are local authorities, they're responsible. But I believe the state government can address all of those concerns. Dr. Narendra Rangappa, do you buy what the Congress party is saying? Are you satisfied with the kind of explanations or the actions that have been taken by the elected government of the day? Dr. Rangappa. See, let me start by condoling the family of the unfortunate victims of neglect that has happened in Bangalore. The Congress government is shedding a tear, and should I say it's a crocodile tear, because the Congress government is squabbling among itself, the ministers are squabbling amongst themselves, there is no coordination, and there is an open declaration by the government that there will be no money issued for any developmental works. And this is not an isolated incident, ma'am. A few days back, a lady who was going on a two-wheeler, she slipped and she held on to something to support her and she got electrocuted. And a few days back, a lady walking home from work who waded into the water pool that was lying on the roadside got electrocuted. And Congress is still shedding a crocodile. Who is responsible for this? The minister in charge, is he not responsible? Why should he make a scapegoat of the 5 lowly officials? You should have taken moral responsibility rather than shedding away the moral responsibility. See, they are busy asking for DCMs, ministries, collecting money and sending them to other states for funding. This is the activity that Congress is making, and the government is paralyzed. They are not doing any work, and this is a classical glaring example of neglect on the part of the Congress government. Aishwarya, you're right that in various instances, it's the local authorities, local bodies which are directly responsible. But for God's sake, it's the IT capital of the country. It's the city of Bengaluru, which we all are very proud of for the kind of ecosystem it has created, the startups and the business that it's creating. The dream of a 5 trillion economy cannot be complete without Bengaluru really thriving and surviving. But if you have roads which have become death traps, if a young mother and her 9-month-old baby can die because of electrocution, or a girl riding a scooty can once again get a shock, or just slip into urban flooding, what kind of cities are we creating? When the Congress party was elected to power, it was elected to power on the promise of a good governance. Are you really delivering that, especially in an urban center like Bengaluru? I honestly believe that in this debate, the BJP spokesperson would rise above politics and talk about what is an issue that, as bipartisan as it has to be, all of us have to come together. Madam, you can't hide away in such statements. You have to come and act. You have to show that you are concerned. You have to come out of your political shell and do some developmental works. Sir, I'm sure it's very easy for you to say that because you're in opposition, but I can give you 10 instances. What were you saying when you were in opposition? Sir, please don't interrupt. Sir, one at a time. Let her make her argument. I'll come back to you, sir. Let her make her argument. Please go ahead, Aishwarya. For somebody that acts holier than thou and wants to preach, let me tell you this. The government that came into power inherited
the sort of absolute apathetic and completely destroyed sort of Bangalore, whether it was the floods, whether it was the metro pillar falling, whether it's the CM himself saying that Cord Road cannot be navigated even though he had just inaugurated it, whether it's the metro station that started flooding after the Prime Minister inaugurated it before elections, you realize that we inherited an absolutely pathetic and abysmal sort of administration after the 40% BJP government. What are we doing different? We sent every one of the tendered works to audit and said if it does not match up to standards, the contractor will be held personally responsible. With regard to the metro pillar that fell, the BJP had awarded the company that constructed the metro pillar another tender in Kalburgi, which we have cancelled. And we have taken proactive action. Mr. D.K. Shivkumar has not only started Brand Bengaluru, but is meeting every single stakeholder. And you want to talk high and mighty. Where did this happen? This happened in Madhevpura. I did not come to this debate to point fingers. But if you really want to point a finger at me, the BJP really has to look at the four other and other that were pointing at you. But the sort of ridiculous corruption you indulged in. You all are nothing more than a machinery of absolute apathy. And that is reflected. You finally have a leader of opposition who says negligence. What happened when he was... Aishwarya, you've made your points. Dr. Rangappa, please. The BJP, please. For everybody. You've made your point, Aishwarya. Dr. Rangappa, please go ahead. Yes. See, the very fact that they are trying to shy away from their responsibility is made obvious by the statement that the Madhepura MLA belongs to an X party, Y party, Z party. The responsibility of the whole state lies with the hands of the Congress government, which is paralyzed, which is sleeping, which is squabbling amongst themselves. Madam, the most unfortunate thing is the Chief Minister of Karnataka is on the back foot, defending his son in corruption charges, in transfers and taking money and transferring. Aishwarya, now let him make his argument. Now, I did not let him interrupt you. Activity. So, where is he? So, where is he heading to? Is he thinking about other developmental works, or is he thinking about? All right, I have last 1 minute on the show, and I have indulged both the BJP and the Congress in the political blame game that does not befit, frankly, either of you. It's a very unfortunate incident. I mean, imagine somebody lost their wife, somebody lost their daughter for no fault of them. They were merely walking on a footpath which is meant for pedestrians, and they lost their life in this gruesome manner. Imagine what the family must be going through. Aishwarya, there might be a history of corruption and misappropriation in Bengaluru. You are the elected government with a thumping majority in the state. You have much to do. Let me make this very, very clear. What has happened is something that is absolutely unpardonable, and we're going to work to make sure this never happens. Moving above and beyond political bickering, I think that my government has taken responsibility, has also taken moral responsibility, and we are going to obviously the action being taken, because all of us need to rise above. When the BJP has 100 different, the standard game plate that they have for everybody. Sorry, I'm completely out of time, but Aishwarya, I appreciate you say that we have to rise above petty politics, and I hope we rise above petty politics and no other 23-year-old mother loses their life with their infant in their hands because they were electrocuted on a road in Bengaluru. We'll continue tracking that story much more here on CNN News 18. That's a wrap on this edition of Brass Tacks. Thank you so much for watching. Presented by नहीं, घनी आबादी का क्षेत्र तो इस इलाके को नहीं कहा